Bismillahirrahmanirrahim. Miss Mehwish here. Today we have a new topic, that is stoichiometry. What we will learn in the stoichiometry? What is the basic definition of stoichiometry and with which it is actually concerned? What is the importance of stoichiometry in firework manufacturing, engineering work, chemical work, as well as we will study all about the combustion of hydrogen fuel in rockets. What would be its calculation work, how it is actually concerned, and in the last but not least, law of conservation of mass. The basic definition of stoichiometry is the branch of chemistry deals with the study of relative amount of substances involved in chemical reaction as given by balanced chemical equation is called stoichiometry. Actually, stoichiometry is a Greek word derived from the Greek word stoichions, which means elements. Metry, everyone knows metry means measurements. So actually we will study all about the chemical measurements, the measurements of reactants and products, the ratio between them in this chemistry. As chemistry is versatile, it actually consists of so many branches: physical chemistry, organic, inorganic, analytical, environmental, industrial chemistry. So stoichiometry is actually an other extension of the chemistry. We can say that chemical reactions are frequently written as an equation. By using chemical symbols, reactants are displayed on the left hand side of the equation and the products are shown on the right, with the separation of either a single or double arrow that signifies the direction of the reaction. So, kind of difficult word, but with the long time practice, we will have correct pronunciation of stoichiometry, right? So move towards the very first importance of stoichiometry, that is firework manufacturing. How it is actually concerned with the firework manufacturing. Calculated amount of chemicals is required for firework manufacturing. As we know that a wrong calculation can ultimately lead to disasters or explosions or violence. Right, next is engineering work. So how it is actually concerned and the calculations of engineering work for the combustion of hydrogen fuels in rockets. Rockets are the concerned materials of engineering. Which types of engineering depends upon the field. So engineers take keen note while prepare the fuel of the rocket. Third one, the chemical work while a chemist is working in the lab, right? He or she should know the exact proportions of the reactants, their reactivity, their violence activity. Calculations are actually concerned the correct proportion of the reactant, the correct proportion of the product. Let's discuss an example related to stoichiometric calculations, the formation of water in the form of steam as a fuel in rocket jets. Two molecules of hydrogen reacts with one molecule of oxygen to form two molecules of water. This equation is actually consisting of two sections, reactant side and product side. Left hand side is the reactant side. We have two reactants, H2 hydrogen plus O2 oxygen. Both of these reactants are in gaseous form. While on the right hand side, that is product side, we have water in the form of liquid. When these two reactants react, we will get fuel in the form of water or steam. What is the molar ratio of the reactants? 2 moles of hydrogen gives 2 moles of water. 1 mole of oxygen reacts with 2 moles of hydrogen and form 2 moles of water. 2 moles of hydrogen is equals to 4 atomic mass unit. Why 4? One hydrogen atom consists of 1 atomic mass unit. 2 molecules of hydrogen gives 2 atomic mass unit, while the coefficient 2 will multiply by atomicity of hydrogen, that is also 2.
Atomicity means number of atoms. 2 by 2 gives you 4. So the atomic mass unit of hydrogen is 4. On the other hand, same calculations for oxygen. One molecule of oxygen carries atomic mass unit 16, while 2 molecules of oxygen gives you 16 by 2 gives you 32. 32.0 atomic mass unit. Same is the case with water. Relative MR calculations of water is 18, so 18 by 2 gives you 36. So all in all, in the reactant side, 32 grams of oxygen plus 4 grams of hydrogen. 32 plus 4 gives you 36. While on the product side, we will get 36 grams of water. So all in all, what we have equal moles of reactant and equal moles of product during the course of reaction. We have 36 grams of reactant, while at the end of the reaction we have 36 grams of product. What this ratio is actually depicting? This ratio is actually depicting an other law that is all about mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass is actually related to the energy changes. And what it is all about that energy can neither be created nor destroyed, but it can transform from one form to another form. How this law is actually related to the previous discussed example of stoichiometric calculations of fuel in rockets by the combination of hydrogen gas and oxygen gas. Look at the product. We have 36 grams of reactants, 32 of oxygen and 4 of hydrogen. They were transforming into water, that was product, again 36 grams. So 36 grams of reactants transform into 36 grams of products. Both of the two reactants, hydrogen gas and oxygen gas, were identically, individually reacting. By the combination of two elements, two identities, hydrogen and oxygen, we get a valuable product in the form of fuel, that was water. Only the difference is that in the reactant side, both the elements were isolated, while in the product side, they are chemically bonded and hence transform into useful product. So this is how stoichiometric calculations are actually related to law of conservation of mass. So in the end, the summary session, what we have learned in the whole slideshow, that was all about stoichiometry. Stoichiometry is what? Stoichiometry is a branch of chemistry that is actually dealing with the relative amount of substances involved in the chemical reaction. It's a Greek word. Stoichions means element. Metry means measurements. So the measurement of elements involving in any chemical reaction to transform into product is actually stoichiometry. Then we learn all about the importance of stoichiometry in firework manufacturing. किस तरह से ये firework manufacturing में involve है. अगर हम करेक्ट अमाउंट नहीं लेते रिएक्टेंट्स की तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा. इंजीनियरिंग वर्क में ये किस तरह से इन्वॉल्व है? फॉर द करेक्ट केमिस्ट्री and the correct manufacturing, it is actually involved in engineering work for the efficient combustion in combustion engines, right? Next is chemical work. जब हम लैब में काम करते हैं, मीन्स एज अ स्टूडेंट, तो हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हमने करेक्ट प्रपोर्शन लेनी है रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स की. रिएजेंट्स आर एक्चुअली केमिकल लिक्विड्स, सो करेक्ट प्रपोर्शन लेनी है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड कौन सा है? एवरीवन नोज इट्स सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड्स. अब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम इम्प्रॉपरली हैंडल करते हैं, लाइक हमें 5 ml चाहिए बट वी विल टेक 10 ml बाय यूजिंग द शक्कर और पिपेट. हम 10 ml ले लेते हैं और इस एसिड में हम एक और एसिड ऐड करते हैं, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोपोर्शन कम कर देते हैं. व्हाट विल हैपन्स? ऑब्वियसली वी विल नॉट एबल टू गेट द करेक्ट प्रोडक्ट. हमारी करेक्ट प्रोडक्ट जो हम डिज़ायर्ड सॉल्ट बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा. सो ज़िंदगी में कोई भी काम करें उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है
कि आपने कितनी म्याना रवि इख्तियार की, कितना आपने बैलेंस रखा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल को भी अगर केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो बैलेंस रख के अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं दे आर सक्सेसफुल. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हीरोज इन द हिस्ट्री एंड इन आवर डेली लाइफ. सो कम टू द पॉइंट, केमिकल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क एंड फायर वर्क मैन्युफैक्चरिंग. उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी, दैट वॉज हाउ combustion ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल इन रॉकेट्स इज एक्चुअली कंसर्न विद स्टोइकियोमेट्री. रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स थे, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में है. एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पार्टीशन को. एरो दैट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, एरो हेड किस तरफ होगा? राइट साइड पे होगा, प्रोडक्ट साइड पे होगा. राइट साइड पे हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं. रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल वाटर के बने हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. वाटर क्या है? फ्यूल है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि हम हाइड्रोजन को एज अ लिक्विड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल्स में रिएक्शन कराने के लिए. रीज़न इज़ दैट अगर गैशियस फॉर्म में गैस सिलेंडर्स हाइड्रोजन के रॉकेट में फिल करके रखेंगे, एक तो मास प्रॉब्लम होगा, मतलब लोड ज़्यादा हो जाएगा. सेकेंडली इट कुड एक्सप्लोड. गैसेस को कंप्रेस करके गैस जार्स के अंदर स्टोर किया जाता है, सो धमाका हो सकता है. सो जब भी रॉकेट्स में यूज़ करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में यूज़ होती है. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे इन्वॉल्व हैं इसमें? प्रोडक्ट साइड पे देखें, 36 ग्राम्स बने हैं वाटर के बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एक्चुअली कंसर्न्ड विद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. ये लॉ हमें क्या कहता है? इस लॉ के मुताबिक हम इस दुनिया में एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ भी तो हमने ऐसे ही किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और वाटर बना दिया. हाइड्रोजन आइसोलेटेड गैशियस फॉर्म में थी, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में थी, कंबाइन करके वाटर एज अ फ्यूल बना दिया. थोड़ा सा रत्तो बदल किया, लेकिन हमारे पास एक नई प्रोडक्ट आ गई. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू पेरेंट रिएक्टेंट्स. इस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क फ्रीली, नो वरी टू गेट हेजिटेट, राइट. थैंक यू. In the end, gracias everyone and stay tuned with me. So stay tuned and subscribe my channel, share the videos, and obviously press the bell icons to all so that you may get the updates of my videos. I will obviously upload for all of you. Well, thank you for your positive feedback, for your likes, views, and shares. Allah Hafiz.